Good morning, dear children. Today we are going to start our fourth chapter in EVS, the story of Amrita. This chapter is based on a true story of Amrita Devi Bishnoi. She lived in Khejdi village in near Jodhpur in Rajasthan. Now, where is Rajasthan? We have been doing map work. You very well know the map of India. So Rajasthan is there, shown in the light shade in the map of India. You can see it is Rajasthan. Rajasthan mein you can see Jodhpur. So Khejdi village was near Jodhpur. Rajasthan, as you know, is a desert area. Very few trees grow there. So the people of this Khejdi village where Amrita Devi used to live, they used to like sort of worship the trees. वो trees को बहुत मानते थे. They used to take a great care of trees. So let us start with the story first. This is a true story from long ago. Almost 300 years ago, in a village called Khejdi lived Amrita. So Amrita lived in the village of Khejdi. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejdi trees that grew there. There were many khejdi trees in Khejdi, so the village also got its name. You can see the tree in the picture. This is a khejdi tree. So there were many such trees, and so the village got its name Khejdi. The people of the village took great care of the plants, trees, and animals. Goats, deer, hare, and peacock roamed fearlessly there. So all animals moved fearlessly. Nobody harmed the animals. Nobody harmed the trees. The people of the village remembered what their elders used to tell them. जैसे हमको बड़े लोगों की बात याद रहती है, उनको भी अपने बड़े लोगों की बात याद रहती थी. तो उन्हें याद था when they were small, their parents, their grandparents, दादा दादी, नाना नानी उनसे क्या कहते थे? वो कहते थे अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us. पेड़ पौधे, animals, they can live without us. But we cannot survive without them. But we need plants. Can you imagine living on earth without plants? ऐसी जगह पर हम रह सकते हैं जहाँ plants नहीं हो एक भी? हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? हमें खाना कैसे मिलेगा? पर अगर हम नहीं होंगे तो एनिमल्स से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा. Plants can survive. They can survive with each other. But we need plants. We cannot live without them. So this people of Khejdi knew this very well. So they only took a great care of the trees. And so did Amrita Devi. You can see her real picture in the picture I am showing. She is this one standing in the center with her friends. So she used to spend her time with the trees. When she was small, she used to play around the trees. You can see in the picture shown in the book. Now, Amrita's friends, what her routine was, what did she used to do as a child? Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. So, who was Amrita's friends? The trees. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunks and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also." So, what did they do? This is the game they played. Every morning she used to get up
and greet her friends. Greet means in the morning when we get up, we say नमस्ते, प्रणाम, जो भी करते हैं हम अपने एल्डर्स को ग्रीट करते हैं, फ्रेंड्स को हेलो हाय जो भी बोलते हैं. तो शी यूज टू ग्रीट हर फ्रेंड्स वर ट्रीज. सो हाउ डिड शी स्पीक टू हर फ्रेंड्स? एवरी डे शी चोज अ स्पेशल ट्री. रोज एक ट्री सेलेक्ट करती थी वो, और शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री. ट्रीज के आसपास अपनी आर्म्स करके उसको कस के पकड़ लेती थी, हग करती थी और कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज वॉट शी सेड. यू केयर फॉर अस. आप हमारी केयर करते हो, इसके लिए थैंक यू, एंड आई लव यू वेरी मच. सो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द ट्रीज एंड देयर ब्यूटी. Like Amrita, the other children also had their special trees. So इसी तरह से बाकी बच्चे भी एक एक स्पेशल ट्री बनाते थे, रोज का अपना रखते थे, and they used to play around that tree for the whole day. So they were living a very happy life. Now trees in danger. What happened in future? Time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. So time went on. One day when in the morning she went to greet the trees, रोज जाती थी वो ट्रीज के पास. एक दिन जाती है तो she saw some strangers, some new people in the village. That too they were with the axes. उनके पास एक्स थी, कुल्हाड़ी थी. You can see in the picture. इन लोगों ने एक्स ले रखी है, तो they were having axes. And they said, what did they say? They said that king had sent them. उन्होंने कहा हमको राजा ने भेजा है. For cutting the wood. They wanted wood because they had to repair the king's palace. King के palace का काम चल रहा था, वहाँ बनाने के लिए they needed wood, and for the wood they wanted to cut down the tree. Amrita was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. What did she do? She loved the trees, so what did she do? She hugged the trees. वो एक पेड़ के पास गई और उसने पेड़ को हग कर लिया, उसको अपने हाथ से टाइट से पकड़ लिया. एंड उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, उनको कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट शी डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. उसने ट्री को छोड़ा नहीं. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. पर राजा ने बोला था, तो दे यूज टू फॉलो द किंग्स ऑर्डर. दे हैड टू डू इट, सो दे हैड टू फॉलो. दे हैड टू कट द ट्री. पर उनको ट्री कट करना ही पड़ा. On seeing this, Amrita, on seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. लेकिन जब उनको देखा तो और भी उनके विलेज के जितने भी लोग थे, अमृता की जो डॉटर्स थी, अदर विलेजेस, हर फ्रेंड्स, वो सभी वहाँ आ गए. एंड दे ऑल डिड द सेम. उन सब ने एक एक ट्री को हग कर लिया. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऑल ऑफ देम आर हगिंग द ट्रीज. सो मेनी पीपल including Amrita and her daughters died to save the trees. So what happened? The king's men, they had to carry on the orders. They anyhow cut the trees, and along with trees many people lost their lives. बहुत सारे लोग उसमें उनकी डेथ भी हो गई उस लड़ाई में जो भी हुआ, because they wanted to cut and they did not want to cut, so
दिस वे मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their lives for trees. Now kings were very rich people. उनको बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पता था किंग को. जब उसको पता लगा कि the villagers had died for the trees, पेड़ को बचाने के लिए लोगों की जान चली गई, तो he felt really bad. He visited the village himself. वो खुद गांव जाता है. And when he saw the scene there, when he talked to the villagers, he learned a lesson. उसको मन में बहुत ख़राब फील होता है. And he learned a lesson that we should respect trees and animals. उसको लगा कि वाकई actually trees are so important for us. So he visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. So the villager, that way he learned the lesson. और उसने क्या सीखा कि हमको ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. जब उसने विलेजर्स की बात सुनी तो उसको लगा हाँ ये लोग तो सही कह रहे हैं, मैं राजा होकर मैं इतना नहीं सोच पाया. तो ही वॉज डीपली टच्ड. एंड क्या किया उसने आगे? ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म्ड इन दैट एरिया. फिर उसने एक ऑर्डर निकाला कि अब से नो ट्री विल बी कट, कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा. नो एनिमल विल बी हार्म्ड, किसी एनिमल को हार्म नहीं किया जाएगा इन हिज एरिया. इवन टुडे, ऑलमोस्ट 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. और तब से लेकर आज तक बिश्नोईज हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. है तो ये डेजर्ट में ही, लेकिन डेजर्ट के बीच में कुछ एरिया ग्रीन भी होता है. ये उस ग्रीन एरिया की बात है. और वहाँ आराम से एनिमल घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता है. और एनिमल्स तो हमें पता ही है, इफ़ वी विल नॉट डिस्टर्ब देम दे नेवर वांट टू डिस्टर्ब अस. So this was the story. I have also collected some pictures of खेजड़ी. कैसा होता है ट्री, शायद आपने भी देखा होगा, इतने पिक्चर से नहीं समझ आ रहा है. These are the leaves of खेजड़ी trees you can see, and this is the flower of खेजड़ी tree. ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर में बीन्स लगती हैं बड़ी बड़ी, जिसकी लोग सब्जी भी बनाते हैं वहाँ के लोग. So these are the leaves and flowers of the Khejdi tree. You can see how beautiful it is. Now about Khejdi tree. The Khejdi tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water. Khejdi tree desert areas में मिलती है and it can grow without much water. क्योंकि desert में वैसे ही पानी नहीं होता, तो वो भी बहुत कम पानी में भी वो लग जाती है. इट्स bark is used for making medicine. bark मतलब पेड़ की जो छाल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है नीचे ट्रंक की, उसको इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स. जो उसके फ्रूट्स होते हैं, बीन्स होती हैं जो, उसको लोग कट करके खाते भी हैं. इट्स bark is used for making medicine. उसके bark से मेडिसिन भी बनती है. Its wood is such that it will not be affected by insects. उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, जल्दी उसमें insects affect नहीं करते. Animals in this area eat the leaves of khejdi and children like you play in it. Animals उसकी leaves को खाते हैं, वो उनके लिए leaves important होती है. बच्चे उसकी शेड में खेलते हैं.
and trees give so many things. So this is what we learned in this chapter. Now your today's work is, you will read the lesson again and think it over कि आपने क्या क्या सीखा, and you will write about the खेजड़ी tree. This thing जो दिख रहा है अभी आपको सामने, ये आप अपने कॉपी में भी लिखोगे. About Khejdi tree. Some more facts are, Khejdi tree is the state tree of Rajasthan and Telangana in India. इंडिया के 2 states की state tree है Khejdi tree. It can grow without much water. बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है. It needs less water. It remains green even in summers. Generally in summers everything dries up. Leaves of the trees also fade down, but Khejdi tree remains green. It gives shade to travelers and animals in the desert area. Desert में animals और travelers को वो shade देती है. Its beans are cooked and eaten as food. उसके beans को cook करके एक सब्जी बनाई जाती है. Animals eat its leaves. The bark of Khejdi tree is used for making medicines. उसके bark से क्या बनता है? Medicine बनती है. So with this we come to an end. You will write these 7 sentences in your copy and learn them.